Hello, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Kasakai, Kedo Halai, Kem Cho. Friends, welcome to our live show Conversation This Say, and I'm your host Abha Jadhav, along with your favorite host, Wing Commander Rakesh Kumar Prashar. राकेश जी स्वागत है फिर से एक बार आपका. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच आभा जी. और इसके पहले कि आप कुछ बोले, आज मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आज भी मैं बहुत खुश हूं. वेल, पिछले हफ्ते आप खुश थे क्योंकि ये हमारा पहला इशू बेस्ड एपिसोड था और 13 फरवरी की तारीख को हमारा 13वां एपिसोड था. पर आज आपकी खुशी का क्या कारण है भला? इसका आज एक नहीं, आज दो कारण है. मैं आपको बताता हूँ. हाँ. पहला तो ये कारण है कि ये हमारा पहला एपिसोड है, और इसके पहले कि आप बीच में बोले कि पहला एपिसोड नहीं, हमारा 14वां एपिसोड है. मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा पहला एपिसोड है जो कि 2 पार्ट्स में स्प्रेड हुआ है. सो दैट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर अस. और दूसरा ये कि हमारे पिछले एपिसोड के बाद मुझे अपने पर्सनल मेल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव कमेंट्स प्राप्त हुए थे, जिनके कारण मैं बहुत खुश हूं. वाओ, दैट्स ग्रेट. और अगर आप इजाजत दें तो एक दो को मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा. बिल्कुल, व्हाई नॉट. ओके. तो सबसे पहला जो मुझे मैसेज आया था वो था, सुनील मोहन ने मुझे केरला से मैसेज भेजा था कि ऑल पीपल आर द सेम, ओनली देयर हैबिट्स डिफर, द डिफरेंस इज डिसिप्लिन. तो मुझे ये मैसेज बहुत प्यारा लगा. और एक मैसेज, दूसरा मैसेज आया था अनिल बांगा का, दिल्ली से. उन्होंने मैसेज भेजा, उन्होंने लिखा कि एवरीवन मस्ट चूज वन ऑफ द टू पेन्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट. तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इट इज एविडेंट कि ये कोट डॉक्टर एपीजे कलाम, जो हम लोगों ने अपने पिछले एपिसोड में कहा था, उससे प्रेरित है. और तीसरा मैसेज आया कृष्णा कुमार से. उन्होंने भी दिल्ली से मैसेज भेजा है कि सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट, डिसिप्लिन इज अ ब्रिज बिटवीन द टू. तो मुझे बड़े अच्छे लगे. That's really beautiful. And So, all these three are beautiful and innovative original messages. तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे. And I said I must read them. डेफिनेटली आई ट्रूली एग्री विथ यू. अपने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि डिसिप्लिन क्या है और एक स्टूडेंट के लिए एजुकेशन सेक्टर में और पेरेंट्स के लिए और डिफेंस में डिसिप्लिन का क्या रोल है. तो पिछले हफ्ते हमने इस वादे के साथ फिर से जुड़ने का वादा किया था कि हम बात करेंगे कि व्हाई इज डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट, अर्थात अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं राकेश जी. एक मिनट आभा जी, इसके पहले कि हम शुरू करें, आई वांट टू ऐड अ कैविएट टुडे. The fact is that discipline and punishment are often confused with each other because they often work hand in hand. But we need to remember here, when we're talking in this particular episode, let us remember that discipline isn't the same as punishment. They are completely different. I truly agree. While punishment focuses on making a person suffer for breaking rules, discipline is about teaching them how to make a better choice next time. और अक्सर जैसे ही हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन, वहां पे लोग इसको इमीडिएटली एक पनिशमेंट के साथ या कोई कड़ाई के साथ या कोई स्ट्रिक्टनेस के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं. एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा. पनिशमेंट एक इन द मोमेंट रिएक्शन, ऑन द स्पॉट में भी, और इन द मोमेंट रिएक्शन है for any misdemeanor, whereas discipline is an art which is learned over a period of time. This is one reason why we are having a repeat show, because हमने बोला ना, over a period of time. So शायद that is the reason why we are doing it over a period of time, over a period of a second episode. Sadly, discipline is a concept everyone is aware of, everyone talks of, but very very few people truly understand. बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से डिसिप्लिन को बहुत नेगेटिव वे में लिया गया है, जैसा कि अभी हमने बात किया पनिशमेंट की. तो उसी तरह से ये है कि अगर हम उस थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाएं कि एक नेगेटिव वर्ड है कि डिसिप्लिन यानी कि बहुत कड़ाई, बहुत पनिशमेंट, उसकी जगह जो एक कारण है जो बिल्कुल लोग समझने की कोशिश नहीं करते कि डिसिप्लिन जो है वो लाइफ में कितने पॉजिटिवली हमें इफेक्ट भी देता है. So it's really people are not attempting to understand this, that most of the people do not understand the importance of discipline. Absolutely. और मैं आपको उसमें बताऊं एक बात कि there was a very famous quote by Immanuel Kant when he said, man must be disciplined for he is by nature
raw and wild. So we can understand Absolutely. the importance of discipline from this quote. बिल्कुल, पिछले हफ्ते हमने यह भी चर्चा की थी कि जहाँ डिसिप्लिन की अनुपस्थिति किसी के जीवन में chaos और confusion पैदा कर सकती है, वहीं डिफेंस सर्विसेज में इसकी अनुपस्थिति can sound the death knell of a nation. आई एग्री, और मुझे अच्छा लगा इस बात से कि आपको मेरा पिछले एपिसोड में यूज किया हुआ सेंटेंस आपको याद था और आपने उसको रिपीट कर दिया. थैंक यू. बिल्कुल, और हमने यह भी चर्चा की थी कि अनुशासन सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें सफलता प्रदान करने में मदद करता है. इस सिलसिले में मुझे याद आता है कि पिछले हफ्ते आपने ये भी कहा था कि लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर. यस, आई रिमेम्बर हैविंग सेड दैट. और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस सप्ताह मेरे पास इससे भी बेहतर कोट है. सुनना वो क्या चाहेंगे? है? क्या है? The quote for this week is life without discipline is like an octopus on rolling skates. वाओ. और बेसिकली इसका मतलब यही है कि डिसिप्लिन लोगों को अपना जीवन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जीने के लिए नियम प्रदान करता है. अन्यथा लोग रोलर स्केट्स पर एक ऑक्टोपस की तरह एमलेस और डायरेक्शनलेस हो जाएंगे. बिल्कुल, और यहाँ पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारी ऑडियंस का, जिसमें जुड़ गए हैं ध्रुव पारे, जो गुड इवनिंग कह रहे हैं हम दोनों को और डिसिप्लिन के बारे में सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. हमारे साथ जुड़ गई हैं गीता प्राशर जी, जो हमें गुड इवनिंग कह रही हैं और साथ में कह रही हैं लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एनलाइटनिंग सेशन, गुड वाइब्स. और साथ में जुड़ गए हैं पेट्रिशिया क्लार्के जी. वोम रेड, आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज है या इसका कोई फुल फॉर्म हो. इसके साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ हरीश अरोड़ा जी, जो कह रहे हैं, जो हमें हेलो विश कर रहे हैं पराशर जी. और साथ में जुड़ गए हैं अभिलाष भारद्वाज जी, जो कह रहे हैं विंग कमांडर सर पम्प्स इंटेलेक्ट इनटू माय थॉट प्रोसेस. ऋचा सिंह जुड़ गई हैं, वो कह रही हैं टॉपिक. यस, एंड और साथ में कह रही हैं ऋचा जी कि थैंक यू सो मच डॉक्टर जादव एंड ब्रिगेडियर भसीन फॉर ब्रिंगिंग दिस रेलेवेंट टॉपिक टू अस. ऋचा जी, हियर ब्रिगेडियर भसीन इज नॉट देयर, बट यस, हियर इज विंग कमांडर राकेश प्राशर जी. और जुड़ गई उनका जूनियर और हमारी बहुत पुरानी एक फ्रेंड जुड़ गई हैं साथ में, रोमिता सुरेश जी, जो कह रही हैं कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर आभा जादव एंड विंग कमांडर राकेश जी. I loved your previous episode on discipline and I'm enjoying it today too. Thank you for inspiring us with this topic again. God bless you both. वाओ, दैट्स फैंटास्टिक. और आपने बंद कर दिया तो मैं एक दो मैसेजेस पढ़ दूं. ऋचा सिंह कहते हैं वंडरफुल कोट. हम लोग 3-4 कोट पढ़ चुके हैं, अब किसके बारे में था मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट इट वाज नाइस टू हियर दैट. हरीश अरोड़ा जी कहते हैं वेरी गुड कोट वंस अगेन. आई डोंट नो व्हिच कोट इट वाज, बट थैंक यू वेरी मच हरीश जी. Richa Singh says, wow, happy, good. Or interesting quote. Sushil Verma ji has joined us and he says, very encouraging. Thank you very much. Thank you very much, Sushil ji. And Lydia Chang says, awesome discussion. Thank you very much, Lydia. Your earlier message was I think it was in a code language which we could not understand, and I hope this is much better. We are able to understand the message completely. Roshan Sayyed says, good evening. And Krishna says, one must try and be a disciple first in order to be disciplined. Wow, that is absolutely beautiful. I love that. क्या कहते हैं आप इसके बारे में? Absolutely. One should try to be a disciple first in order to be disciplined. Very nice thought. Yes. So, discipline के बारे में आगे बात करते हैं. अभी आपने जो कोट कहा, लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक एन ऑक्टोपस ऑन रोलिंग स्केट्स, तो उसकी जो आपने व्याख्या दी है उससे मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में हमें छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार करता है और ताकि हम अपना फ्यूचर बहुत ही बेहतर बना सकें. और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. एंड लेट मी टेल यू अभा जी, ऋचा सिंह का मैसेज आया. शी सेज आई लव द ऑक्टोपस कोट. थैंक यू वेरी मच. और दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक दैट स्माइल केम ऑन आवर फेसेस, बिकॉज आई लव दैट कोट व्हेन आई रेड इट सो मच. ओके, हैविंग सेड दैट, एज यू सेड, yes, discipline in your life allows us to make small sacrifices. I totally agree with that. And I would like to say, आप जो कहना चाह रहे हैं बेसिकली शायद मेरे ख्याल में वो यही है कि discipline helps you achieve your goals. Am I right? Absolutely.
बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। जी हाँ, हर किसी के जीवन में लक्ष्य होते हैं और ये लक्ष्य, गोल्स आवरली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली या इससे भी अधिक लंबे समय के हो सकते हैं। ये लक्ष्य वजन कम करने से लेकर के नया कौशल सीखने तक, यानी कि वेट लॉस और कोई भी नया स्किल सीखने तक या जीवन में कुछ हासिल करने तक हो सकते हैं। आपके लक्ष्य जो भी हों, उन्हें पाने के लिए आपको अनुशासन की आवश्यकता होती है और यह रातों रात पूरे नहीं होते हैं। एब्सोल्युटली आई एग्री। डिसिप्लिन सुनिश्चित करता है कि वी बिल्ड न्यू हैबिट्स, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड इफेक्टिवली मैनेज आवर टाइम। इनके साथ आप अपने परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण सुधार ही नहीं देखेंगे, पर महत्वपूर्ण सफलता भी प्राप्त करेंगे। वाह, क्या बात है राकेश जी! आपने एक वाक्य में 3 महत्वपूर्ण बातें कर दी हैं, जो अनुशासन के कारण जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। पहला, अनुशासन आपको नई आदतें बनाने में मदद करता है। दूसरा, अनुशासन आपको प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने को रोकने में मदद करता है। और तीसरा, अनुशासन आपको समय को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि ये 3 महत्वपूर्ण बातें कर दी है, तो मेरा ख्याल शायद अगर इसको भी एक कोट फॉर्म में डालें, एक तीर 3 शिकार। वाह, मजा आ गया। बिल्कुल। तो क्यों ना ऐसा करें कि इन तीनों के बारे से शुरू करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से इनसे शुरू करने के बाद अपने आज की चर्चा में जो बाकी जो इंपॉर्टेंस है डिसिप्लिन के, उसके ऊपर आए। पर इसके पहले मैं एक दो मैसेज और पढ़ना चाहूंगा। एब्सोल्युटली। Nirmal Verma says, I love your voice, and I'm sure she's talking about you, Abhaji. And Harish Arora says, I mean the octopus quote. Wow, I think आज discipline से ज्यादा octopus छा रहा है हमारे discussions में। And सुशील वर्मा जी ने ज्वाइन किया मैसेज, अपने एक साथ एक और मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि very true, even thinking of disciplined life fills the oneself with very high energy, and that leads to success in every walk of life. Absolutely, I agree. And Lydia Chang once again says, passionate heart and love will push throughout all discouragement consistently in achieving whatever goals. I agree with that. And Richa Singh again says, totally love the value addition by Rakesh ji. Good. Thank you very much. At least, Richa ji, I took Abha's name, but thank you for convincing me that you mean me also. And so, so let's start talking about the first three issues that we talked about, and then take on the subject one by one. Abhaji? Okay, I'm ready. So first is discipline builds good habits. Okay. So हर किसी की कोई ना कोई बुरी आदत होती है जिसे वह दूर करना चाहता है। पुरानी आदतों को छोड़ना और तोड़ना और नई आदतों को विकसित करना हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज होता है। पर आई नो ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, असंभव नहीं। Absolutely, दिस इज वेयर absolutely. डिसिप्लिन मैटर्स। वही बिल्कुल, डिसिप्लिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करता है, जिससे आप नई आदतों को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। लगातार अपनाने से जो नई आदतें हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो आदतें भी आपका एक सेकंड नेचर बन जाती हैं। और इसके नतीजतन क्या होता है कि हम पिछली बुरी आदतों से छुटकारा पाने में सक्षम हो जाते हैं। और माना जाता है कि कोई भी नई प्रैक्टिस, कोई भी नई आदत अगर आप शुरू करें, तो 21 दिन तक लगातार उसको अगर आप फॉलो करें, तो वो प्रैक्टिस एक हैबिट बन जाती है, और उसके बाद आपको उसका एक उसमें से भी एक आनंद मिलने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाने जैसी साधारण सी अगर बात करें, शुरू में मुश्किल जरूर लगता है, बेड छोड़ना, ठंड में रजाई के अंदर रहना, पर बाद में हम इसके बिना नहीं रह सकते। लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया महसूस करते हैं अपनी मुझे जिंदगी में हम लगता लोग। है राकेश जी, ये आपने एग्जाम्पल मुझे लेकर के यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह से इनिशियली मुझे भी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए उठने में आलस आता था, मैं थोड़ा सा टाला करती थी। बट एज यू सेड कि डेफिनेटली जैसे ही 1 हफ्ते तक मैंने वॉक पे कंटिन्यूस मैंने जाना शुरू किया, आज ये हालत है कि बिना वॉक के दिन पूरा नहीं होता। सो और एब्सोल्युटली। आपको मैं अगर बताऊं कि मैंने पता कैसे इसको ओवरकम किया। जी। मैंने मॉर्निंग वॉक छोड़ के इवनिंग वॉक शुरू कर दी। अरे वाह! क्या बात है। वॉक इज़ इम्पोर्टेंट, योर रूटीन इज़ इम्पोर्टेंट वेदर यू आर डूइंग यस, इट मॉर्निंग और इवनिंग। सो करेक्ट। एब्सोल्युटली यह मुझे आपके द्वारा उठाए गए अगले पॉइंट पर लाता है, और वह है डिसिप्लिन हेल्प्स यू टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग।
जैसे आपने एब्सोल्युटली। उदाहरण दिया, उसमें 5 मिनट की अतिरिक्त नींद या मैं कल से शुरू करूँगा वाला कमिटमेंट सबसे बड़ी समस्या है ना? जैसे अभी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि चलिए अभी हम आज से ही हम वॉक पे जाना शुरू करते हैं, तो जनरली हम सुनते हैं कि अरे कल चलते हैं ना, क्या ज़रूर अभी आज ही क्यों जाना है, कल चलेंगे या उठ जाओ जल्दी आज हमें 2 काम ज़्यादा करने हैं, तो हम कहते हैं यार 5 मिनट और सो लेता हूँ थोड़ा-सा, है करेक्ट, ना? करेक्ट, तो ये करेक्ट। जो आदत है, ये बहुत बड़ी समस्या है और हम सभी प्रोक्रेस्टिनेशन के दोषी हैं, क्योंकि हम एग्ज़ैक्टली। सभी चीज़ों को बाद में टालने की कोशिश करते हैं। आपका बिल्कुल। अनुशासन एक पुश बटन है, जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के टेम्पटेशन को खत्म कर देता है। एक तरह से जब आप अनुशासित होते हैं और अच्छी आदतें बनाते हैं, तो चीज़ों को पूरा करने की आपकी क्षमता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कैसा महसूस करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को अधिक अच्छा महसूस करने के लिए कैसे ऊपर उठाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, तो आपका डिसिप्लिन आपको एक ऑटो पायलट मोड पर काम करने के लिए मजबूर करता है और आपका जीवन शांति और खुशी की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इस बात पर मुझे एक सुंदर कोट याद आ रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। और इसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है, तो वो है वो स्नूज बटन जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, हम तुरंत उसको बंद करके 5 मिनट की और स्वीट नींद लेने के लिए सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यही सुशील वर्मा जी ने एक बहुत ही बेहतरीन कमेंट दिया है कि डिसिप्लिन ट्रूली लीड्स अ लाइफ फ्री फ्रॉम प्रोक्रास्टिनेशन एंड दैट इज श्योर पाथ टू अ ब्यूटीफुल लाइफ विद ईज़, जॉय एंड ग्लोरी। सो आभा जी एंड वाओ! I love that. Ease, joy, and glory. Beautiful यस words. Absolutely. एंड आगे वो हम दोनों को ही थैंक्स कह रहे हैं इतने अच्छे सेशन के लिए। अभी तो शुरू हुआ है, कार्यक्रम अभी बाकी है सुशील जी, पर प्लीज़ टेक इट। आबा जी, आप बीच में दो मैसेज मिस कर गए। एक मैसेज था आशुतोष राज का, जिन्होंने कहा है कि डिसिप्लिन इज अ रिफाइनिंग फायर बाय व्हिच टैलेंट बिकम्स एबिलिटी। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, जो हमारा दिल से जो डिस्कशन है, ये यही है कि हम जो बात कर रहे हैं उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन जो आ रही है, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके वैल्यू एडिशन आर रियली हेल्पिंग अस आउट। और एक मैसेज जो एब्सोल्युटली। वरिंदर खेरा का जो कहते हैं, डिसिप्लिन helps in achieving life goals. Absolutely. And Sushil Verma ji again says, Abha ji and Rakesh ji, thank you for such a wonderful program. Lydia Chang again comes back and says, procrastinations are fear and insecurities. I love that. Yes, it is a thief of time, but they are actually also fear and insecurities put together in an individual. And one new addition now, Manas Roy Chaudhary, who has joined in, says, my search for discipline is over when I heard Mr. Prasher, that is disciplined. Wow, वाओ! wow, wow. व्हाट अ फैंटास्टिक कमेंट। थैंक यू thank, मानस thank, फॉर सच अ thank you very लवली much, Manas. यस। सो यस, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के एक परिणाम के रूप में हम अगले पॉइंट पर आते हैं कि डिसिप्लिन हेल्प्स यू टू मैनेज योर टाइम्स बेटर। Absolutely, I agree. Discipline helps you in managing your time better. And आबा जी, आप एक टाइम मैनेजमेंट कोच हैं और आपसे बेहतर टाइम मैनेजमेंट की बात कोई नहीं कर सकता, स्पेशली मैं तो नहीं कर पाऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ओवर टू यू। थैंक यू राकेश जी। जब लोग अधिक अनुशासित होना चाहते हैं, तो वे अक्सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम कैसे डिसिप्लिन लगेंगे, तो सबको एक ही ख्याल है कि अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो आई कैन बी द बेस्ट डिसिप्लिन पर्सन। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के बड़े से बड़े दिमाग वाले लोगों के पास भी दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। बात यह है कि उन्होंने अपने समय का उपयोग कुछ सार्थक करने के लिए कैसे किया। सो बेहतर आदतें बनाकर और प्रोक्रेस्टिनेट ना करके हम ना केवल बहुत सारा समय बचा सकते हैं, बल्कि हमारे पास जो समय है उसका बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट आपके द्वारा विकसित किए जा सकने वाले बेस्ट स्किल्स में से एक है, क्योंकि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर एप्लीकेबल है और अनुशासन आपको उस स्किल को बनाने में मदद करता है। आबा जी, अगर मैं बोलूं, मैं आई टोटली एग्री विद यू, पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमें वास्तव में बहुत काम करने की जरूरत है।
यही नहीं, और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं कि कई लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम कह के मजाक बनाते हैं। मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि मुझे अपने डिफेंस बैकग्राउंड पर बहुत गर्व है, और ये भी साथ साथ बताऊं कि डिफेंस की पहले दिन की ट्रेनिंग से ही शिक्षा दी जाती है कि इट इज बेटर टू बी एन आवर अर्ली देन टू बी अ मिनट लेट। और एब्सोल्युटली। आपको तो पता ही है कि हमारे मेंटोर ब्रिगेडियर सुशील बसिन कहते हैं, द टाइम्स ऑफ सेविंग टाइम आर पास, नाउ इट इज अबाउट क्रिएटिंग टाइम। सो इफ वी आर एबल टू क्रिएट टाइम, इमेजिन if you have a day of 25 hours, wow, imagine what all we can Absolutely. achieve with that extra time we save and create. So thank you राकेश जी here for reminding our mentor Brigadier सुशील वसील सर, और उन्होंने Yes, इस पूरे टाइम मैनेजमेंट के कंसेप्ट पे कि किस तरह से डिसिप्लिन में रह के हम इसे इफेक्टिव बना सकते हैं और कैसे 25वां घंटा रेडी कर सकते हैं अपने लिए, एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है मिलियन डॉलर सेकंड। तो मैं सजेस्ट करूंगी हमारे सभी ऑडियंस से कि वे अमेजोन पे डेफिनेटली इस बुक को जरूर ऑर्डर करें और अपनी लाइब्रेरी में जरूर शामिल करें और उसे पढ़ें भी। सो हाँ, इसके अलावा एक बार जब आप समय को बेहतर मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप स्ट्रेस को कम करने में भी केपेबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। सो यहाँ हम जो हम बात करेंगे, ये मैंने जो अभी बात कही, ये हमें लेकर आ रहा है अपने अगले पॉइंट पर कि डिसिप्लिन हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। हमारे आज absolutely. की मॉडर्न फास्ट पेस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस फ्री नहीं है। अधिकांश व्यक्ति एंग्जाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित हैं, और जो विभिन्न कारणों से हो सकते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कारण व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से बीमार भी पड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने समय का सही उपयोग नहीं करने पर स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। यहीं पर अनुशासन जीवन को कम अव्यवस्थित बनाने में मदद करता है, और आप पहले की कंपैरिजन में कम तनाव महसूस करते हैं। डिसिप्लिन इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। Absolutely, I totally agree with that. Let me also add, discipline helps us to feel more in control of ourselves, which helps us to become a better version of ourselves. मुझे यकीन है कि हम सभी ने इस भावना को डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि वी हैव सो मच टू डू बट सो लिटिल टाइम, समय नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरे पास तो मरने तक का समय नहीं है। इसका मतलब क्या है? इससे घबराहट महसूस होती है और हमारा ध्यान भटक जाता है। एट सच टाइम्स गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू हैंडल heavy workload even without excessive stress, because it puts us in control and it gives a direction even when we have too much of work to do. this uh, एब्सोल्युटली। actually this actually the best part of this is when you आपने जो stress की बात की, this time management, what happens is this not only allows us to enjoy our work more, it also helps to make us relaxed so that we can really enjoy our life, which helps us to increase our productivity. और सो यहाँ आभा पे जी, आपको मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, नाउ दैट यू टॉक्ड अबाउट, बिकॉज आवर प्रोग्राम इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, दिस इज अबाउट डिसिप्लिन। वैसे बिकॉज आप टाइम मैनेजमेंट के कोच भी हैं, तो आप संक्षेप में अगर मैं आपसे जो सुनना चाहूंगा कि पुअर टाइम मैनेजमेंट के कारण होने वाले स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या है? उन सिम्टम्स पर जाने से पहले हमारे एक बहुत ही आदरणीय ऑडियंस, हमारे जो सर हैं वो ऑडियंस में जुड़ गए हैं। मिस्टर एला प्राशर जी कहते हैं, द Yes. टॉपिक चोजन फॉर द चैट इज टॉपिकल and extremely important. We need to understand the difference between an unruly mob and the disciplined troops. रिचा जी कहती Absolutely. हैं, discipline is a way of life that helps you achieve your dreams. Lydia Chang again add, one task at a time, define what is urgency and what is important. So And not Lydia only Chang, that, Richard Singh has yes, also accepted your plea and said, I will certainly go in for the book. So thank you very much, Abhaji, for making sure that one more copy is purchased by Richard Singh. And there's another message which you missed out from Sushil Verma when he says, discipline is a true heaven on earth as it creates divorce-free relationships amongst all. wow. What a beautiful thought, and I'm really happy that हमारी ऑडियंस आज बहुत ही ज़्यादा हमारे
कॉन्वर्सेशन में वैल्यू एडिशन कर रही है, सो थैंक यू वेरी Absolutely. मच. एंड Yes. कमिंग बैक टू योर टॉपिक, दैट सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस कैन, Yes. जो आपने पूछा कि पुअर टाइम मैनेजमेंट से कैसे हो सकते हैं, सो मुझे खुशी है कि आपने ये चीज पूछी, क्योंकि अधिकांश लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वे टाइम मैनेजमेंट की बैड इफेक्ट्स के कारण स्ट्रेस से पीड़ित हैं, स्ट्रेस्ड हैं. Absolutely. सो अगर मैं एकदम शॉर्ट में बात करूं तो कुछ जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ जो उसके फीचर्स हैं बैड टाइम मैनेजमेंट के इफेक्ट्स के, वो हैं इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग्स, मीन्स चिड़चिड़ापन होना और बार बार हमारे मूड्स में चेंज आना. टायर्डनेस एंड फटीग, हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं हम ज्यादा थके हुए होते हैं, हम ज्यादा परेशान रहते हैं. इनएबिलिटी टू फोकस और कंसंट्रेट, तो जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, हमारा ध्यान बार बार भटकते रहता है. इसके अलावा मेंटल ब्लॉक, मेमोरी लैप्सेस एंड फॉरगेटफुलनेस, हम चीजों को बार बार भूलने लगते हैं और कई बार बात करते करते अचानक ब्लैंक हो जाते हैं. देन लैक ऑफ स्लीप, ये तो बहुत कॉमन लक्षण है कि अगर हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, रातों की नींद, दिन का चैन सब गायब हो जाता है. और सबसे खराब जो चीज है, इवन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बेचैनी, और जो डिप्रेशन से हम शिकार होते हैं वो कई खतरनाक आगे परिणामों के लिए हमें ले जाती है. यस. Absolutely. Let me add here, Abhaji. When you are not able to manage your time effectively, you may be actually unclear about what is important and end up reacting to the demands made by others rather than doing the work that needs to be done or something Absolutely. which you enjoy doing. So, this will not only make the stress levels go even higher, but also reduce the quality of your work. Absolutely, I truly agree. There are many strategies which we can adopt to make time management easier. These includes better planning, better prioritizing, delegating tasks, avoiding multitasking, using personal planning tools like planner, calendar, phone applications, diaries, and even setting alarms. I can make out, everybody I think in this audience today will be able to make out that you are a time management coach. And maybe I think someday we may even think in terms of having an episode on how to manage time effectively also. बढ़िया विचार है, हम निश्चित रूप से ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं. इन शॉर्ट, जो आपने बात कही उसको अगर मैं पैराफ्रेज करूं तो डिसिप्लिन्ड पर्सन कैन मैनेज द टाइम टू कंप्लीट ऑल द टास्क्स विद इन द गिवन डेडलाइंस, वेयरएज आपको पता ही है कि देयर आर सम पीपल हु एक्सपैंड देयर वर्क सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. सो इट इज so that is a humorous way of saying it, but that's a fact also in reality. Once you are able to master time, you will be able to master life also. तो यहाँ पर मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगी. एक दोहा ऐसा है जिसको अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन और डिसिप्लिन में नहीं रहते तो कैसा हो जाता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों. लेकिन जब हम डिसिप्लिन वे में जीते हैं तो कबीर का एक बहुत ही फेमस दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. तो जब ये जो है, ये बात डिसिप्लिन को लेकर ही ये दोहा लिखा गया है. ये जो आपने जो सही सीरियल में जैसे किया, जो पहले परसों वाला और बाद में आज वाला, सो आई थिंक दैट शोज दैट यू आर अ ट्रू टाइम मैनेजमेंट कोच. एब्सोल्युटली. सो ये हमें अगले पॉइंट पर ले आता है कि डिसिप्लिन हेल्प्स टू इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड मास्टर आवर थिंग्स. I agree. Discipline helps us to control our thinking and emotions. So, with that, what happens? We are able to concentrate better and achieve our objectives also. Yes. Absolutely. So, aligning our thoughts and goals makes it easier to regulate routine activities and increases the focus and concentration on work. Needless to say, it enhances our productivity. Look at persons who are successful in their respective field, be it Lata Mangeshkar, Ratan Tata, Sachin Tendulkar, Dhyan Chand, APJ Abdul Kalam, or whosoever they may be. You will notice one thing in common, and that is discipline. So they not only Absolutely. follow a strict routine at all times, whether it is waking up, exercising, or training, they are also committed to self improvement in their field always. Yes.
Rafael Nadal did not become the winner of maximum Grand Slams without discipline, self-discipline. Absolutely, I totally agree. Nobody can can achieve success without self-discipline. But let me also add here, Abaji, discipline also helps us to improve our patience. If we do not have patience, I don't think we really will be able to be successful. You know, as you have the examples that you have given, all the successful people have proved that patience is very essential in life, as it helps us to channelize our energy into useful activities. If you want to master Absolutely. something, then discipline is absolutely non negotiable. Not only this, when you become a master of your trade, your power of concentration also improves, and this helps us to reduce the stress also that we talked about a little while earlier. Yes, very true. Increased power of concentration and reduced stress helps improve your ability to manage challenging emotions, which brings us to the next point, and that's discipline improves your ability to manage challenging emotions. यहाँ पे आबाजी, there is one quote which I love. That is one of my most favorite quotes, which I want to spell out before you say anything. And that is, we might be the masters of our own thoughts, but still we are slaves of our own emotions. Uh, it's a I fact that, truly agree. Yes. emotions define a human being, and human beings have an ocean of emotions within us: Yes. love, hatred, anger, joy, guilt, sorrow, courage, hope, and so many more emotions. Now, some of these emotions are good, while some of these emotions are bad also. No, no, Rakeshji, no emotions are bad. I would rather say some emotions are more challenging than others, like anger is a good example. Luckily, discipline helps you to learn to manage it and express it healthily. But this Ah, requires practice, and I have myself applied this in my life. I agree with you. I would love to hear that. यस, ये हुआ कि मैं पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी और क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहती थी, मैं अपना काम समय पे नहीं कर पाती थी, तो डेफ़िनेटली हर चीज़ की भागा-दौड़ रहती थी कि कैसे मैं अपने काम को डेडलाइन्स में पूरा करूँगी। देन डेफ़िनेटली जिस तरह से अभी हमने सक्सेसफुल लोगों की बात की, ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में मैंने पढ़ा, उनकी आदतों के बारे में पढ़ा, वो क्यों सक्सेसफुल हैं, उनके कारणों को जानने की कोशिश की और कहीं न कहीं मैंने देखा कि मेरी जो हैबिट्स हैं, वो थोड़ी-सी चेंज करने की ज़रूरत है और मैंने उनको चेंज किया। मैंने डेफ़िनेटली पहले काफ़ी सारी टू डू लिस्ट बनाने से लेकर के काम की प्रायोरिटाइज़ेशन, गोल सेटिंग और ये सारी चीज़ें करते हुए फाइनली जब अपना काम मैं समय पे करने लगी, तो मैं रिलैक्स्ड रहने लगी और मैं रिलैक्स्ड रहने लगी, तो स्ट्रेस कम हो गया। स्ट्रेस कम हो गया, तो मैं खुश रहने लगी और मेरा गुस्सा उड़न-छू हो गया। Absolutely great. And let me take this opportunity of reading out some messages now. Lydia Chang says, priorities first. Absolutely. And she again goes on to say, we must know when to say no for self love. Very strong message, Lydia. I love that. We must learn to say no, because not being able to say no actually leads to increased stress. There's one more एब्सोल्युटली। message which I'm not able to make out. I think it is in Russian language. It says, "Be your life." Now, if you can decipher that, I think I am not able to decipher it. Another message from Ashutosh Raj. He says, as long as you have discipline, you can be a success. Discipline is what makes you do everything you need to do. One more message which comes once again, I am unable to decipher. It says, warm today. Yeah, probably yes, warm. I think Delhi is very cool today. Sushil Verma, Sushil Verma, who is a energy coach. I can make out from his messages. He says discipline is a very powerful energy that attracts money and abundance in all aspects of life. Absolutely, Sushilji, I totally agree with you. It is a very strong money magnet and it attracts abundance. Now, having said that, let me also add and say, when you talked about emotions, I feel discipline applies to all emotions, as you rightly said, but I also feel it applies to all our habits also, and it makes us more reliable, therefore.
सो राकेश जी, 2 इम्पोर्टेंट मैसेजेस और थे जो आप भूल गए, मैं उन्हें लेना चाहूँगी। लीडिया चैंग ने और एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट शी हैज़ एडेड, एंगर इज़ इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर। एंड देन our very regular audience, Geeta Prasharji is saying discipline is inculcated and not taught. Wow, Absolutely, yes. absolutely. And Richa Singh is adding flavor to it. Live in the present moment, be mindful about the present, and optimize it to its fullest. Wow, that is So, beautiful. Thank you very much. so as you said that emotions, it applies, discipline applies to our emotions also, as well as to our habits, which makes us Habits. more reliable. So Yes, yes, remember, we have to remember that we just talked of the fact that without discipline, our power of concentration and focus is reduced. We just talked. So this yes, can have significant effect on our life. So let me give you an example. If you aren't good at time management, you might struggle to meet deadlines at work, reach designated place, events yes. and appointments on schedule, or even spend enough time with your loved ones. अगर आपका टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन की वजह से अगर आपका सही नहीं है ना, तो आप कोई भी काम, कोई भी छोटे से छोटा काम भी होगा, तो आप वो टाइम से नहीं कर पाओगे। चाहे वो आपके कोई अपॉइंटमेंट्स आपने जो शेड्यूल किए हैं उसको टाइम से फॉलो करना, या अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा वक्त बिताना। मेरे ख्याल से अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपको वो वक्त ही नहीं मिलेगा कि आप अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिता पाएं। सो दिस विल अर्न यू अ रेपुटेशन फॉर नॉट बीइंग रिलायबल. So improved discipline will does not only help you become more reliable, but also boost your self-esteem. I totally agree. But आबाजी आपने कभी नोट किया है there are some people who take pride in the fact कि यार ये तो Mr. Late Latif हैं. They take pride in that fact. That's a very sad state. I wish to say, as you have very rightly said, it boosts your self-esteem. Yes, discipline definitely boosts your self-esteem, and I say so because there is nothing more satisfying than breaking old habits and Absolutely. forming new habits over them. As these will not only help you in meeting your goals that you have decided for yourself, but also in significantly boosting your self image. Now, continuing to stick to newly planned routines will not only allow you to enjoy your newfound confidence, but it will also make it easier for you to continue being disciplined. Now, since you gave your personal example earlier, let me give you an example from my own personal life also. If you are Absolutely, please. uh, जैसे कहते हैं ना all stories start with once upon a time, so let me also start with saying once upon a time I was a very heavy smoker. One Oh. fine day, on my parents' appeal, I gave up smoking. Now it has Hmm. been more than 25 years since I've ever touched a cigarette. Now, whenever there is a talk of determination or willpower, thank you very much, Abaji. That clap definitely proves the fact that yes, you are boosting my self esteem also. Now, whenever there is a talk of self esteem, or talk of determination and willpower, in any gathering, whether it is from our family side or whether it is from friends or relations, everybody gives my example. Imagine that proud feeling I have and that effect that it has on my self esteem. That clap has also added to my self esteem. Absolutely. And this is really, really a wonderful and encouraging and motivating example you have given, Rakeshji. I think many people in our audience today, they will be definitely getting inspired by this example. So your example of determination and improved self-esteem brought about by your disciplined approach must have surely cast a great impact on others too. So I fully agree that the effect of your high self esteem carries over into the rest of your life, and this can inspire family, friends, relatives, and even those in your circle of influence to follow suit you. Looking at it in the larger perspective, this can translate to improved quality of life in society too. Frankly speaking, I will not be able to comment much upon the society part of it, but yes, I definitely do believe that our self esteem greatly impacts other areas of our life, which in turn impacts our circle of influence, as you just said, and then that probably leads to some extent, an effect on the society too.
The best example of this I can think of is from the armed forces, where being disciplined in one area extends into the rest of the defense personnel's lives also. That is because the impressive results of the increased self confidence in one area enable you to develop the same discipline in all walks of life. And before I completely endorse your point and move further, I want to welcome my one of my ex students. She was my student in the audience. She has commented, "Self discipline strengthens your inner strength." So thank you, Neeral. Sorry, she is Nirmal Verma. Sorry. I thought she is a Neeral Verma. So I got confused. But anyways, I have remembered my student here who was Good. one disciplined child in the class. Again, Vicky Vaswani is joining here and commenting that thanks Abhaji and Agesh sir for enlightening session. Motivation is just an ignition spark, whereas discipline is reserve of fuel which makes you succeed in long journey of life. Wow. Wow. That is really fantastic. And Ashutosh Raj is adding salute to the determination and willpower of Wing Commander, sir. So this is for you, Rakesh ji. देखो मैंने आपको बोला था ना, this adds to your self image and your confidence, which impacts other people also. देखा, this is proof. Absolutely. So I now fully endorse you on that point, Rakesh ji. This shows in the way defense personnel adhere to the rules and regulation of the organization where Yes. they work and behave in the workplace at all times, even after they have long retired from the service. No wonder then that defense personnel are highly sought after by the corporates even after retirement. Absolutely, there's no doubt about it. I agree with you. So before we close, one question which I would like to ask is how discipline inculcated in all in the defense services? Well, Abaji, for this, I will take you back to the previous episode. If you recall, in the Yeah. last episode, I had said that all military training right from day one is aimed at three things. Number one, instilling self confidence. Number two, building trust amongst the team members. And number three, creating a collective will, that is the will of the nation. That means downplaying your will in the interest of the collective will of the nation. Now, this spirit is developed amongst all the defense services. The first step towards inculcating this discipline in the defense services is about creating a passion for selfless service. Self, Yes. it is service before self. So if you are passionate about your job, you work hard, and you work when you work hard, you have more enthusiasm, you work with more energy, you have more zeal. As such, you follow rules because you want to, not because you have to. Secondly, no act of indiscipline is ever pardoned in the defense services. Now, let me tell you of something which probably many people may not be knowing of. As part of the punishment process for any indiscipline in the defense services, all members of the group are forced to bear responsibility and share the punishment equally with the actual offender. This is in the form of collective punishment. This develops a spirit of esprit de corps, or a feeling of pride and mutual loyalty, which is shared thereafter by all the members of the group. This helps bind all the people of the group together. Now, let me tell you, these are just one odd ways that I have talked about inculcating discipline in the defense services. There are so many other umpteen other measures to inculcate discipline in the defense services, but to talk of them would require more than one full episode. Maybe, God willing, we may do another episode on that subject someday. Yes, sure. Why not? But that's the amazing thing you have told over here. So, never heard of any such thing ever in my life. So, in conclusion, I think we can safely say that discipline not only creates a standard of life, but it also systematically shapes a person's life. Absolutely, I agree. But let me also add here saying that I still feel that we have only touched the tip of the iceberg today.
Now, Yes, before I say anything else, there's a beautiful message from Krishna who says, "Life without discipline is like an arrow without a target." Wow. You shoot without knowing what you are aiming at. Fantastic. absolutely. Yes. So I wish to close by saying, in my concluding remarks, as you just said, we are coming towards a conclusion. Success comes with discipline, and only when you work for it. Wishful thinking alone will not let us become disciplined and successful. You need to work on it every single day, every I single hour, every single moment. I absolutely agree with you. So I close today's talk with a beautiful shlok from the Bhagavad Gita. Wow. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो ये व्यवसायिनाम. This translates to the fact that a person with strong intellect focuses on goal. No one can stop him from walking on the path even in the face of extreme obstacles. But the mind of those whose intellect is not focused runs in different direction and they are unable to achieve success. Since our intellect has the ability to control our mind, we should develop intellect along with proper knowledge and use it to direct our mind in the right direction. Is it possible without discipline? Give it a thought. No way, no way. Before you ask me to give it a thought, let me say there is no way, absolutely. And let me tell you, I love this shlok because I remember once upon long, long back, I had used this shlok when I talked about focus in one of my videos. Now, you know that I know that you have closed the topic beautifully, but Abhaji, I'm sure you also know about one more thing कि मैं भगवत गीता से कितना प्रभावित हूँ ये तो आप जानते ही हैं I do know that. Yes. so I think in this case, I would like to add my two bit to this. But before I do that, let me read out a couple of messages which have come. Oh, message Yes. from Bhal Chandra Ladde, one of my postmates from the Indian Air Force. We have donned the blues at the same time. He says, character of nation is built by the disciplined citizens. Yes, and he says, good session. Thank you very much, Ladde, for your excellent comments. Geeta ji says, your charismatic personalities as it is have motivated all of us to be disciplined. Thank you for inspiring all of us. Wow, I think we are doing good. And Bhalchandra Reddy says, thanks, Rakesh and Abhaji. So, Abhaji, now as I told you, I am extremely impressed by the Bhagavad Gita, and I'm doing my studies in that. And shortly, I intend to bring out a video on that too. But because you have closed with the Bhagavad Gita quote, I will ask you for a few seconds more to enable me also to close with a Bhagavad Gita quote today, please. Can I? Permission granted. Okay. So there's a beautiful quote which says, Yukta har viharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta sarvapna va bodhasya yogo bhavati dukhaha. इसका Wow. तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य यह है कि शारीरिक गतिविधियों में संयमित रहकर और योग के अभ्यास से हम तन और मन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं यहां पे हमें समझना है वी ऑलवेज मेक अ मिस्टेक वी नीड टू रिमेंबर हियर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट योग वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फिटनेस वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द mind and the body, the balance between the mind and the body. So इस प्रकार योग के अभ्यास से हम केवल शरीर के एक्सटर्नल एक्शंस ही नहीं मन के इनर थॉट प्रोसेस को भी प्योरीफाई करते हैं और इनका बैलेंस बनाते हैं एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली it was exactly this point that Mr. Sushil Verma had also talked about, that discipline is not only an external manifestation, it is also an internal desire. So I would like to close by saying discipline thus is an act of not only changing our external actions, but our internal thought process as well. And thank you very much, Nirmal Verma ji, for that. So fantastic one. This was really beautiful. एंड आज की जो हमारी डिस्कशन हुई है यहाँ पर राकेश जी दो और टॉपिक सामने निकल कर आए हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड वेज ऑफ इनकलकेटिंग डिसिप्लिन इन डिफेंस सर्विसेज जो डेफिनेटली एक गहरी चर्चा का विषय है जिनको हम आने वाले एपिसोड्स में अपने कन्वर्सेशन का भाग जरूर बनाएंगे क्या कहते हैं आप
Absolutely. I am with you on that anytime. अच्छा यस, तो बट जाते-जाते बट यहाँ पर बिफोर, जो अब इसके पहले कि आप क्लोज करें, कुछ मैसेजेस हैं जो पढ़ने हैं. आई थिंक यू हैव टू रीड दोस मैसेजेस प्लीज. यस, मैं वही पढ़ने जा रही थी। तो यस. जाते-जाते यहाँ पर जो लास्ट कमेंट्स आए हैं, उनको मैं पढ़ना चाहूँगी। आशुतोष राज जी कहते हैं, "टुडे इज़ नेशनल लव योर पेट डे, प्लेथोरा ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम, डिसिप्लिन इन वन।" ऑफ Oh कोर्स, yes, तो आप अपने absolutely. पेट्स को आज ज़रूर प्यार करें और उनसे बेहतर डिसिप्लिन हमें कोई नहीं सिखा सकता, ये हम सब जानते हैं। वरिंदर खैरा जी कह Absolutely. रही हैं कि सक्सेस इज़ नथिंग मोर दैन a few simple discipline practiced every day. Absolutely. Yes. और सुशील वर्मा जी कह रहे हैं, highest regard to both of you for such a wonderful session. Thank you, Sushil ji. And we are really grateful for your wonderful comments. Let We are me grateful add, to the audience. Abha ji, as I said, Sushil Verma ji is an energy coach, and I can assure you that he has definitely added energy to our talk today. Absolutely. I truly agree with you. So let's take leave now. Friends, इजाजत दीजिए मुझे और विंग कमांडर राकेश कुमार आभा पाशर आभा जी जी को। आभा जी आपने एक मैसेज पढ़ा और एक बात भूल गए कि एक जी, मैसेज था दैट आशुतोष राय सेड टुडे इज नेशनल लव योर पेट डे. डू यू हैव एनी जी। पेट्स? No, I don't have, but you have, I think Wow. so. Yes, I Yes. do have. I do have a pet. It's a beautiful little pug whom we have named Murphy, and we love him. And he is definitely a very disciplined dog who is actually helping us also become disciplined. वाओ! So सो वो तो होना ही था। आप वो एक आर्मी फैमिली में है, डिफेंस की फैमिली में है, जहाँ पर वैसे ही डिसिप्लिन जो है वो पग-पग पर मतलब फॉलो किया जाता है, तो उसे तो फॉलो करना ही है ऑफ कोर्स। सो अब इजाज़त दीजिए दोस्तों, मुझे और विंग कमांडर राकेश कुमार पाशर जी को। मिलते हैं जल्दी ही आने वाले एपिसोड्स में, जहाँ बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। सो धन्यवाद, धन्यवाद and राकेश जी। there's one more last minute message from which you have to read out. I'm sure you will not like to miss Absolutely. This that. is so best message coming from my respectable audience, Mr. Ella Prashar ji. Topics like time management, dealing with stressful situation, and motivation through personal examples are need of the day and praiseworthy for inclusion. Absolutely, हम इन्हें जरूर अपने टॉपिक्स को अपने डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे सर, and definitely you will find these episodes coming soon. So thank you very much for your valuable suggestion. So yes, आज्ञा लेना चाहूंगी राकेश जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। It's a धन्यवाद। pleasure. It was a pleasure नमस्कार। today. And when we talk in terms of such subjects, automatically, that motivation level high rises, and there is so much to talk, but so little time. Just the reverse of what I said a little while ago. Don't worry, we have chain of episodes coming up. So we Okay. will discuss all the things in coming episodes. So let's Yes, take leave now. धन्यवाद, absolutely. नमस्कार, and Namaskar. जय हिंद। Jai Hind.